guys. So what will happen? There will be a reaction in which the OH from one of the carboxylic acid and hydrogen from the other carboxylic acid, both of these will combine with each other and they will form water. Now the rest of the molecule will look something like this: R C double bond O with oxygen atom. Now this is oxygen atom bonded to carbonyl carbon and some other alkyl group R dash. Now just for your ease of understanding, I will make this as blue, or rather I should make this as red and make this one as green. Now the fragment which represents the red one is this fragment. Okay. And also this bond here would be. And this whole thing, it represents the green one. Okay. So this is the combination that is happening. And we have formed an anhydride. We have formed an anhydride. So very simply, let us suppose you have CH3. Achha, this happens in the presence of reagent liquid in the presence of H plus and heat, or you can use P2O5 with heat. Okay, so both of these are valid. So if you have CH3COOH and then you react this in the presence of H plus and heat, or you use P2O5 and heat, then what will happen? Please see. Here we are going to use CH3COH. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, there are two carboxylic acid. So 2 moles of this acetic acid will be used and you will be getting CH3, C double bond O, then oxygen, and then C double bond O and CH3. Okay? So whatever the alkyl group is present, that will be present. All of you got this? Basically, अगर आपके पास है RCOOH with any of these reagents, you will be getting RC double bond O. This will be whole twice bonded to oxygen atom. ठीक ना, ये दिख रहा है ना आपको, एक बार और ये दूसरी बार. So this is whole twice. RC double bond O, alkyl group attached with carbonyl carbon is then attached with oxygen atom. All of you got this? Yes or no? Formation of anhydride, yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. ठीक है. इसका नाम जो होगा ना, the one which we have prepared, it is known as acetic acid. Acetic anhydride, my bad. Acetic anhydride. जो reactant है, that is known as acetic acid. Please write this down. After this, you will write the fifth one. Fifth one, right? Formation of ester. Formation of ester. Now, in formation of ester, we use a carboxylic acid, RC double bond O and OH, plus we use some R-OH, that is alcohol. So when carboxylic acid and alcohol, they react with each other in the presence of H plus. Now this is a reversible type of reaction. In the presence of H plus, we will get RC double bond O and then OR dash. RC double bond O, OR dash. Okay, so this alkyl group which is bonded to oxygen, not carbonyl carbon. Okay, this is coming from alcohol, and this alkyl group which is bonded to carbonyl carbon, it is coming from carboxylic acid. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, चलिए, with this do an example. Let us suppose you have 1,2 carbon and COOH, plus you have 1,2 carbon and alcohol. Okay, in the presence of H plus, please send me the answers. What will be product? You guys have 2 minutes.
Okay, just half a minute remaining. You need to identify the alkyl groups, है ना? आपको alkyl group identify करना आना चाहिए. What is the alkyl group in carboxylic acid and what is the alkyl group in the alcohol? ठीक है, I think I got an answer. नहीं, आपने थोड़ा सा उल्टा कर दिया रजिता. देखिए जरा ऑक्सीजन कहाँ पे बॉन्ड होगा. ठीक है, करेक्ट है डेबोरा, लेकिन कार्बोनिल कार्बन आपने गायब कर दिया है. ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा ना कार्बोनिल वाला तो. रजिता, यू आर मिसिंग दिस बॉन्ड, CO. Safia, send it quickly. Yeah, Rachita, now it is correct. Safia, are you sending? Yes, it's taking time to go. I sent it. Actually, you have sent it, fine. We get the answer. So, Deborah, please see here. Here you have two carbon atoms, that is the alkyl group. You write the two carbon atoms, and then you have the carbon, right? So this carbon, double bond O. ठीक है, carboxylic acid. फिर उसके बाद after carbonyl carbon, what do we have? We have oxygen. That oxygen will be here. Then we have how many carbon on the alcohol? We have two carbon on the alcohol. So one carbon and two carbon. Deborah, you got this? Yes or no? Please tell me. Safia, आपका ठीक है, correct है Safia. Okay, these are simple reactions. बहुत ज्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं जाता. डायरेक्ट आपको एक बार डायरेक्टली रिएक्शन पूछ सकते हैं. Nothing else they can ask. Okay, चलिए. Right, next. Formation of acid chloride. Just sixth reaction. Formation of acid chloride. So basically, if you have carboxylic acid, bonded to OH, then you can replace this OH with chlorine. You can replace this OH with chlorine. And what are the things that we can use? We can use PCl5, we can use PCl3, and we can also use SOCl2. ठीक है? So in all of these reagents, अगर आपको याद हो halocene halorine में, all of these were used to replace OH with Cl. Same चीज यहाँ पे होगा. This is going to give you RC double bond O. OH will be replaced with Cl. If you want to write the byproducts, it will be POCl3 with HCl. Second way, you will get the same compound RC double bond O, which is bonded to Cl. Plus, we are going to have H3PO3. And thirdly, we are going to have RC double bond O, Cl. And here we are going to have SO2 and HCl. Okay? So all of these methods. I think this is very old reaction. No? OH की जगह क्या आ गया? Cl आ गया, but आसान भी है. Now this seventh reaction is important. Okay. Seventh reaction is important. Is right formation of amides. Okay, guys, please see. ध्यान दीजिएगा, don't write anything for formation of amide. Please see. We have carboxylic acid, that is RC double bond O and OH. And we will react this with amide, that is NH3. Not amide, my bad. We will react this with ammonia. With ammonia, it is a base. So base will abstract the hydrogen and it will form RC double bond O.
bonded with O negative, and this will be having NH4 positive. Okay, so it is a kind of salt that we are having. After this, what happens? When we heat it, or in the presence of a slightest of heat, when you are going to heat it, H2O leaves from here. Okay, from this salt, H2O leaves. So how is the H2O going to leave? Please, where do we have the hydrogens? We have the hydrogens on the NH4 positive. So 2 hydrogens will leave from there, and this oxygen will leave. So bachega kya? You will have R, C double bond O. Then you will directly have nitrogen, which is left with only 2 hydrogens. And this is the amide. Can all of you see this? Yes or no? Please tell me. Okay. Yes, sir. So basically, kya hona hai? Yeah. Basically, R, C double bond O, and then you have OH. You have to add NH3, and then you have to heat it. You will be directly getting R, C double bond O, NH2. The number of carbon atom is still the same. ठीक है, तो आप लोग एग्जाम्पल वगैरह कुछ लिखना तो लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव benzoic acid, in the presence of NH3 and heat, you will be getting CONH2. ठीक है. Now here only we have an important preparation, that is the preparation of phthalimate. इतना लिख लीजिए जल्दी से आप लोग, फिर भी राइट. Preparation of phthalimate. Assalamu alaikum Fadil, how are you? Is Fadil here? हाँ Fadil है तो. Fadil, am I audible? नहीं. Phthalimate. Okay, are you done or are you writing? Sophia is writing. Yes. Guys, done? Yes or no? Please tell me. Sophia and Deborah. Yes, sir. Okay, fine. See, preparation of phthalimate. In this, you will take a benzene ring, and this benzene ring has carboxylic acids on the ortho position like this. Okay. Now, this will react with NH3. It's kind of an equilibrium reaction, reversible. Now, both the carboxylic acids will be forming amide like this. You have COO negative, NH4 positive. Here also COO negative, NH4 positive. When you are going to heat it, Sir, excuse me, is heat not required? नहीं, heat is यहाँ पे तो heat is not required, no? Because it was the same amide reaction, so I thought maybe heat. नहीं, वो heat तो अगले step में आएगा. आया ना यहाँ पे. When we are making the salt, है ना, उस time तो नहीं required, right? So when you heat it, water will be removed. Water remove होके क्या हो जाएगा? You will be forming amide. CONH2 and CONH2. ठीक है. But when you heat it once more, NH3 will leave. Ammonia will be leaving. When ammonia leaves, please see, one of the nitrogen atom will leave, one of the hydrogen atom will leave, and one of the hydrogen from this particular nitrogen atom. ठीक है ना? तो किसी एक का भी doesn't really matter, and you will get a compound that is known as phthalimide. Phthalimide is a very famous precursor to
many of the medicines that we have. And you will be getting a compound like this. We have nitrogen, which is bonded to H. The carbonyl carbons are like this, and one carbonyl carbon like this. So this is phthalimide. Now, this phthalimide is also there in the chapter of amines, Gabriel phthalimide synthesis. There is a name reaction on the synthesis of 1 degree amines. We call that Gabriel phthalimide synthesis. In that, we are going to use this phthalimide. And this phthalimide is going to give your primary amine. Please write this down. After this, you will write the heading decarboxylation reaction. I don't know what number is this. 8 number. Yeah. Decarboxylation reaction. Now, in decarboxylation reaction, we have 2 reactions. Please see. First reaction is with, first of all, we will have carboxylic acid, and we will get the sodium salt of carboxylic acid by reacting this with NaOH. I will react this with NaOH, and this is going to give me RCOONA. Now, when I react this carboxylic acid, this sodium salt of carboxylic acid with a mixture of NaOH, sodium hydroxide, and calcium oxide, which is known as soda lime. It's the ratio. I mean, when you mix this, it is known as soda lime. When you mix this with soda lime, you are going to get an alkene RH plus this C double bond O. This will be left as Na2CO3. So, क्योंकि यहाँ से carbon निकल जा रहा है, that is why we say that it is a decarboxylation reaction. An important thing to note down here is that here, let us suppose you were starting with R is equal to 5 carbon atom. R is equal to 5 carbon atom. So, and this is 1 carbon atom. So initially we are starting with 6 carbon. But then what do we have here is the alkene. In the alkene, we are only going to have the R, which is 5 carbon atom. So the result that you are getting, the alkene that is going to be produced, it is having 1 carbon less than the carboxylic acid. Is this clear? Yes or no? Okay. Yes. So please write. The alkene formed has 1 carbon less than the carboxylic acid. ठीक है. अब इसके बाद जो आपके पास एक reaction that is known as coal-based electrolysis, in which the same decarboxylation only happened, but the product is a bit different. You'll write coal-based electrolysis. Now, this reaction, it is present in 11th standard also. So you start with R, C double bond O and ONA, sodium salt of carboxylic acid. I hope you now know how to get sodium salt of carboxylic acid. You can just react this with NaOH. And when you electrolyze it, and you do electrolysis, you are going to get R and R. Okay? Write this down.
All of you got this? Someone please tell me. बेसिकली यहाँ पे आपको ना दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो आपके पास एल्केन रहता है विच इज फॉर्म्ड एट द एनोड, है ना, ये जो है ना इट इज फॉर्म्ड एट एनोड, ये लिख लीजिए फॉर्म्ड एट एनोड, प्लस यू विल गेट NaOH which is formed at cathode, formed at cathode, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से आ जाए रिएक्शन, यू हैव 1 2 3 कार्बन एटम्स एंड देन यू हैव COOH, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड विद 3 कार्बन एटम्स। इसका आपने किया पहले NaOH के साथ रिएक्शन and then you did electrolysis, right? Electrolysis. So what will happen? Please see. ध्यान दीजिएगा all of you guys. अच्छा, CO2 निकल जाता है यहाँ से, ठीक है ना। CO2 is also formed and CO2 is liberated. वो आपके पास एनोड में ही होता है, RR और CO2, ठीक है ना, प्लस CO2 भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, which is liberated as gas. NaOH और जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपको मिलेगा this CO2 जो है ना, ये तो बाहर निकल गया, आपके पास बचा क्या, you have 2 carbon atoms left, 2 कार्बन और R and R. So the R here is 2 carbons. So the resultant alkane will be what? It will be having 1 2 3 4 carbon atoms. ठीक है, तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट, that it is going to have 4 carbon atoms in the end. तो बेसिकली अगर if you want to write a formula, यार ठीक से बन जा, हाँ ठीक है. So the alkane formed, I can write the alkane formed will have 2 into n minus 1 carbon atoms, ठीक है। और n क्या है यहाँ पे, what is n here? N is the number of carbon atom in carboxylic acid. N is equal to number of carbon atoms in carboxylic acid, ठीक है। चलिए okay, all of you done writing, yes or no? Rajita, Safia, Deborah. Guys, all of you done writing? Yes, sir. Okay, fine. So this is the end of the carboxylic acid portion also in the chapter aldehyde ketones and carboxylic acid. Now, what chapter are we going to start now? Electrochemistry, right? Anything we discussed? क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वाज इट राइट? रजिता, सफिया? No, so I think at the end we discussed on amines. Was it not amines? Can you please write in the chat क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? All of you guys, what chapter should we start? Rajita, Safia. Like write your preferred chapter, like whatever you want to start. Rajita, Safia, Deborah, and Fadil, all of you guys. Okay, Rajita is amines or electrochemistry. Okay. Safia, I'm waiting for your answer. Safia and Deborah, I'm waiting for your answer. Safia is for amines. Okay. Deborah is for electrochemistry and amines. Fadil, what about you? Sure, I'm okay with anything. You're okay with anything. Safia, is amines going to be on your half yearly or something? No, sir. Nothing as such. Is it fine if we start electrochemistry right now? Yes, sir. It's fine only. Okay.
Okay, then we'll start electrochemistry only, you know. And amines is a small chapter, although would take like, but again, we will start. We will start with electrochemistry. We'll see amines later, and it's not a large chapter. It's a pretty small chapter. Okay. Write the heading electrochemistry. Electrochemistry. Okay, so before starting electrochemistry, थोड़ा सा बस आपको आइडिया होना चाहिए that what is going to happen in this particular chapter, और in general भी थोड़ा सा that why are we studying this particular chapter electrochemistry. ठीक है, so when we talk about science, we generally have to talk about a few things. एक तो matter है हमारे पास, we have to talk about matter, especially in chemistry I'm talking matter and what matter is made up of. So chapters like solution, chapters like you have in the previous classes, atomic structure, chemical bonding, okay, states of matter was a particular chapter. Okay, so all of these things, even equilibrium for that matter, not equilibrium, but these chapters, they deal with matter. Then there is another portion that we have to study, that is change of matter. When matter changes, what happens? So in this change of matter, we study everything which is related to any type of reaction. So what happens when two things, they combine, right? So that is change of matter. Now, whenever matter is changing, there is some sort of energy change also taking place. There is some sort of energy change also taking place whenever a matter is changing. Either it is going to give out some kind of energy, or it is going to take energy for that particular change. And for example, if you want to melt ice, then what you have to, or for example, a better example would be if you want to boil water, if you want to convert water to vapor, you have to give energy, correct? Right. So these type of energy changes are always accompanied whenever there is a change of matter. Now there are some changes in the matter which is spontaneous, and there are some changes which are non-spontaneous. If I divide the change of matter into two categories, it will be only two categories, that is spontaneous and non-spontaneous, right? Spontaneous change, and then we have non-spontaneous change. Now, whenever there's a spontaneous change, it liberates energy. It liberates energy. Energy is given out. Right? Basically, we call them exothermic. Exothermic reactions, as bolte, but better word would be, right? It is a spontaneous reaction, a reaction which happens on its own. You don't have to do anything. A very simple example for not a reaction, but a very simple example would be what would happen if you stop holding your pen. If you have your pen above your tables in some height h, what will happen if you stop holding the pen? The pen will automatically fall down. You will say, no, sir, gravity is acting, then it will fall down. You will say, yeah, for sure. But human does not have to do anything for this particular change, right? Human ne kya kiya? What did the human do? They just stopped holding the pen. But if I want to lift the pen which is already in the table and I want to lift it upwards, then the human has to intervene. Na, ye pen apne aap upar nahi aa sakta hai. Is that clear, guys? Yes or no? Rajita, Safia, and all of you? Fadil, Yusuf? Yes? See, so that is why the non-spontaneous change, whenever you have a non-spontaneous change, in that energy will be consumed and there will be some kind of human intervention. There will be human which will be giving the energy. Now, whenever we have a spontaneous change, right now in the terms of like, jab se electricity aayi hai,
we generally use these spontaneous change to preserve whatever energy is given out and preserve it in the form of electricity. Preserve it in the form of electricity. For example, falling of water from a particular height. It was a natural phenomena which was happening for I don't know how many thousands of years since the human civilization. But only after the advent of electricity, we started building dams now. And those dams are used, what they do, the turbines moves. Why the turbine is moving? Because the water is falling down. The water falling down, it is a spontaneous reaction. It's not a reaction, but rather a change. So whenever we have a spontaneous change, we want to use that. We want to use that to conserve electricity or to make electricity. Okay. Now the same. What is electricity? Electricity is nothing but it is the movement of charges. Now we did not know about electron. That is why लोगों ने उल्टा कह दिया था कि the current it moves from positive to negative, right? Positive to negative. इस तरह से current move करता है. But obviously positive charge cannot move because positive is proton and protons cannot move. So the movement of electrons takes place, right? Movement of electron takes place. And if I look at any particular reaction, for example, एक बहुत ही पुराना रिएक्शन आप लोगों को पता होगा. अच्छा एग्जांपल, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. NaCl का देखते हैं ना. सो Na+ बनता है, राइट, और Cl नेगेटिव बनता है. व्हाट इज हैपनिंग? अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हैपनिंग. हाँ या ना? करेक्ट है गाइस? दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्पॉन्टेनियस. ये हम आप मेरे तरफ से ले लीजिए बिकॉज NaCl, ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज वेरी स्टेबल कंपाउंड. So obviously when a stable compound is formed, there will be energy which is released. So I can easily say here that when the electron itself is moving, आप ये ध्यान से देखिए जरा, लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में ख्याल भी कैसे आया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एंड व्हेन वी आर हैविंग केमिकल रिएक्शन वहां पे तो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो रहा है. इलेक्ट्रॉन इज ऑटोमेटिकली मूविंग. We don't even need to ऐसे टर्बाइन से फिर हमको कुछ और नहीं ले जाना पड़ेगा. टर्बाइन से फिर जाके वहां पे कन्वर्टर कुछ लेके लगाए हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. In the chemical reaction, it is itself some type of movement of electron, right? और जब movement of electron यहाँ पे हो ही रहा है, तो why can't we directly use it and convert it to electricity? Now, this was the starting of electrochemistry, and very initially, how they started was they took a container. You don't have to write anything, ठीक है ना? सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. बस ध्यान से सुनते रहिए, लिखने की कोशिश ना करेंगे आप लोग, ठीक है? You guys will not try to write anything. There is nothing to write. You just chill आराम से और सिर्फ सुनते रहिए, ठीक है? You'll understand each and every part. अगर आपको समझ में ना आया कोई बात तब आप फिर बताइएगा, ठीक है? See here guys. So what they took two different containers or compartments, I would say. In one of the compartments we had ZnSO4. यहाँ पे what do we have? We have ZnSO4 and we have a rod which is made up of zinc. We have a rod which is made up of zinc. Here we have CuSO4 and we have a rod which is made up of Cu, copper rod. Okay. Now, let me just make a few things. Complete करते हैं circuit को, फिर उसके बाद I will explain how they started things and what difficulty they faced. फिर difficulty का उन लोगों ने solution कैसे निकाला. All of these things will be explained. Don't worry. थोड़ा वायर को बड़ा कर देते हैं हम. वायर को अलग कलर भी दे दे क्या? वायर को अलग कलर भी दे देते हैं. What color should I give to the wire? है ना, ये ठीक है. चलिए, तो वायर अंदर तो नहीं रहेगा, थोड़ा सा स्मॉल इरेजर से है, ठीक है. And obviously in the middle I have to give some kind of bulb. So maybe I will use a yellow color. Yellow color आएगा नहीं से, just yellow. कुछ हद तक yellow है, ठीक है. This is your bulb. It's not glowing right now. It's not glowing. We have just made a bulb. ठीक है. Now, when you dipped zinc, you have dipped zinc in zinc sulfate solution. So obviously in zinc sulfate, zinc is present in the form of Zn2 positive. Zn2 positive. So what happens? There is a reaction which is possible. Zinc from the rod, it will go to the solution, forming Zn2 positive and 2 electrons. Why? Because metal have a tendency to lose electron when they are dipped inside the aqueous solution. ये आप लोगों को पता है ना कि अगर आपके पास मान लीजिए Na है और आपने इसको वाटर में डाला, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? Na+ मिलेगा and you will get OH negatives, right? So whenever you dip a
solid metal inside aqueous solution of its own salt, then what you are going to form its ion Z and positive. But please remember that the 2 electrons will not go to the solution, otherwise metal डालते ही आप लोगों को current लग जाना चाहिए था. But that doesn't happen. The electron is still on what? The electron is still on the rod. So when electron is still on the rod and those electrons are extra electrons because उसका जो zinc था वो चला गया पानी के अंदर, right? So the electrons will start moving on the wire because wire is what it is, a conductor. They will move along the wire and they will reach the copper compartment. When they reach the copper compartment, they will meet 3 people. First of all, they will meet copper. So copper will say, come 2 electron, I will eat you. So the 2 electrons will say, no, you are a metal, you don't have a tendency to eat electron. Rather, you have a tendency to lose electron. So those 2 electrons will not be eaten by copper. Then we will be having SO4 2 negative. Okay. Here we have copper 2 positive and SO4 2 negative. So the 2 electrons, so for SO4 2 negative will say that I will eat you. But 2 electrons will say that you cannot eat me because you have a negative charge. I also have a negative charge. We are going to repel each other. We are not going to attract. I will not be even near you. Okay, na? So the 2 electrons will be also reject. They all will also reject the SO4 2 negative. Then they will be CO2 plus. और दोनों इलेक्ट्रॉन की आंखों में आ जाएगी चमक. Because negative and positive, they will attract each other. And obviously, now this reaction is going to happen in the copper side of the compartment. The copper side of the compartment, the 2 electrons have reached from the zinc compartment and the copper 2 plus will eat. When the copper 2 plus will eat the 2 electrons, the 2 positive will be neutralized and it will be formed as copper. Now, obviously, please remember, थोड़ी मतलब exactly हो क्या रहा है उसके बारे में तो अच्छे से ध्यान देंगे. See, the electrons are not going to jump from rod to solution. Electrons are not going to jump from rod to solution. So what will happen? Whatever is present, whatever copper 2 plus is near the whatever copper 2 plus is near this particular rod, they will be in contact with electron. The reaction will take place on this rod itself and the copper will be formed on rod itself. तो यहाँ पे 2 चीजें आप लोग ध्यान से देखिएगा. First of all, what is happening? This zinc is coming from rod, and this zinc Zn2 positive is going to the solution. Now, what is happening at the copper compartment? This copper 2 plus is coming from the solution because solution में ही है copper 2 plus from solution, and then this copper is formed on rod. This is going to rod. क्या इतनी बात सबको अच्छे से समझ में आई? Yes or no? Please tell me. Deborah, Rajita, Safia, Fadil, and Yusuf. Yes, sir. Yes. Yes. Yes ना? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक है. Now, obviously, अब ये चीज रिपीट होने लगेगी, right? This will be repeated. This will be always repeated. कि जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है कॉपर के पास. So, अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बत्ती जलेगी या नहीं जलेगी? बताइए. If the electrons are flowing on the wire, तो बत्ती जलेगी? हाँ या ना? जलेगी. आप लोग की बत्ती बुझ गई. What happened, guys? It will glow. It will glow, right? है ना? चलिए. But what happened after a while? बत्ती बंद हो. सब लोग बहुत खुश थे, गांव में बिजली आ गई. लेकिन कुछ देर बाद चांद दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात. मुहावरा सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना आप लोगों ने? Nobody has heard this. 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात. अब गांव वाले हो गए परेशान. That what has happened? Why is the bulb not glowing? तो फिर आप लोगों को बुलाया उन्होंने, है ना? बुलाया रजिता को, सफिया को, फादल, डेबोरा, यूसुफ, सबको बुलाया कि भाई तुम लोग तो इतना पढ़े लिखे हो, है ना? क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो इलेक्ट्रिसिटी. 12th में तो पीएचडी हासिल कर लिया आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में. 3-3, 4-4 चैप्टर ऐसा पढ़ा आप लोग ने. 2-2 महीना इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हैं आप लोग. पढ़ा के बताइए क्या हुआ, बत्ती क्यों बंद हो गई, है ना? तो आप लोग भी थोड़ा सा बोले नहीं पहले चाय नाश्ता मंगाओ उसके बाद बताएंगे हम. ठीक है. तो गांव वाले बेचारे शरीफ, उन लोगों ने चाय नाश्ता मंगाया आप लोग के लिए. तो आप लोगों ने उन लोगों को ज्ञान दिया. देख भाई हो क्या रहा है यहाँ पे. प्लीज सी ऑल ऑफ यू गाइस व्हाट इज हैपनिंग हियर इन द जिंक कंपार्टमेंट. प्लीज फोकस चाहिए, है ना? फोकस चाहिए. इन द जिंक कंपार्टमेंट, जो जिंक में जो सोल्यूशन है, द क्वांटिटी ऑफ Zn2 plus is going to increase because रॉड से Zn2 plus सोल्यूशन में चला जा रहा है. कैन ऑल ऑफ यू सी दैट? यस और नो? प्लीज टेल मी. बोलो भाई. सही है. तो यहाँ हम कह सकते हैं
कि Zn2+ का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। बेसिकली स्पीकिंग Zn तो कुछ नहीं होता ना, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है बोल दें। I can say ना that positive charge is increasing in the zinc compartment. Correct है guys? Yes or no? Please tell me. Positive charge is increasing in the zinc compartment. अब इधर आ जाते हैं, थोड़ा कॉपर में क्या हो रहा है भाई? कॉपर में what is happening? The copper 2 positive is getting converted to copper. तो obviously positive charge कम हो रहा है, and when the positive charge is decreasing, obviously the negative charge will increase. Correct है guys? Yes or no? Relative negative charge तो increase कर जाएगा ना, negative charge ज्यादा हो जाएगा वहां। Is this clear? Yes or no? Positive charge बढ़ा, negative charge बढ़ा, इधर उधर, ठीक है। Yes. अब जब पॉजिटिव चार्ज जिंक में बढ़ जाएगा, when the positive charge in the zinc compartment will increase, जिंक तो इलेक्ट्रॉन को कहीं जाने ही नहीं देगा, है ना। अरे सोचो जरा, व्हाट वाज हैपनिंग इनिशियली तो ठीक है, चलिए बात यहाँ पे Zn है, बट व्हेन द पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज अ लॉट, देन व्हाट वुड हैपन, द इलेक्ट्रॉन ऐसे उसने कदम बढ़ाया, जिंक बोले अरे भाई रुक, हम है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आई एम द पॉजिटिव साइड, कम, वो बुला लेगा वापस। अब जब वो इलेक्ट्रॉन को वापस बुला लेगा, अब वो भी छोड़, चलो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन भाग के चला भी गया, तेरे पास सब इलेक्ट्रॉन बदमाश, वो भाग के इधर कॉपर कंपार्टमेंट पहुंच गया। अब कॉपर कंपार्टमेंट में पहुंचा तो क्या दिखता है, व्हाट चार्ज इज प्रेजेंट, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो चुका है, सो इट इज रिपेलिंग, कॉपर ही पूरा भाग गो, एंड जिंक इज कॉलिंग देम, सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विल बी इन द जिंक कंपार्टमेंट इटसेल्फ। और बेसिकली व्हाट विल हैपन व्हेन द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस अ लॉट, the reverse reaction will start taking place. The 2 electron which was once given out by the zinc solid, the zinc atom, it will then again be reacting with Zn2 positive and forming zinc. ठीक है, तो the reverse reaction will be taking place in the zinc compartment, और उसी तरह से reverse reaction यहाँ पे भी होने लगेगा। तो आप लोगों ने तो बता दिया है ना, चाय नाश्ता पी के आपने ये बता दिया, अब गांव वाले भाई सोल्यूशन भी बता दो, तो आप लोगों ने बोला नहीं खाना खा के बताएंगे, है ना, आप लोग भी कम चालाक नहीं है। तो खाना वाना खाने के बाद आराम से आप लोग खटिया उटिया लगा के बैठे, और आपने बोला एक काम करो, अंदर से ना, ऊपर से तो वायर से तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, अंदर से तुम एक टनल बनाओ, ठीक है, अंदर से क्या करो, एक टनल बनाओ, हम बनाते हैं अच्छे से थोड़ा, अरे अरे सारा मिल गया, अंदर से आप एक टनल बनाइए, और इस टनल के अंदर क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉन को पता नहीं चलना चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। सो इस वजह से हमने अंदर से टनल बनाया है, और इस टनल में हम लोग कुछ चीज रखेंगे, और इलेक्ट्रॉन को भनक भी नहीं लगेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के नाक के नीचे से यहाँ पे धांधली हो जा रही है, करप्शन, अंडर द टेबल आपने क्या रखा, यू विल कीप अ इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों हो उसमें, और एक वन सच एग्जांपल वुड बी KCl, ठीक है। KCl में आपके पास होंगे Cl नेगेटिव, और आपके पास होगा K पॉजिटिव आयंस। अब जैसे ही जिंक कंपार्टमेंट का, जैसे ही as soon as the positive charge of the zinc compartment will increase, इलेक्ट्रॉन के आने से पहले ही क्लोरीन नेगेटिव भाग के आएगा यहाँ पे, इट विल न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज। क्या सबको दिख रहा है ये चीज, हाँ या ना, जल्दी बताएं। As soon as the negative charge increases on the copper compartment, the K positive will come running along and it will neutralize the copper compartment. इलेक्ट्रॉन को पता भी नहीं लगा, इलेक्ट्रॉन चले जा रहा है, गांव वाले पूरा खुश और बत्ती जल रही है। क्या आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फंडा समझ में आया, दिस होल थिंग, यस और नो, प्लीज टेल मी। यस सर। सबको क्लियर है, ठीक है। चलिए, नाउ इफ यू वांट टू राइट समथिंग, तो आप सबसे पहले तो कुछ बातें हम बोल रहे हैं उनको आप लिखिएगा, ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें भी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, जो हमने यहाँ पे कराई हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये सब चीजों का मतलब आपको पता है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, reduction is gain of electron or loss in oxidation state,
A redox reaction is the oxidation reduction reaction यहाँ पे दोनों चीजें हो रही हैं. Electrolyte is any compound which that dissociate to form ions in liquid phase. ये सारी चीजें पता है ना आप लोगों को? लिखाने की जरूरत है या नहीं है? लिखाने की जरूरत है नहीं ना? चलिए ठीक है, अगर किसी को जरूरत होगी तो फिर वो धीरे धीरे वो क्लास में ही समझ जाएंगे. आप एक काम कीजिए, आप इस खूबसूरत से डायग्राम को एक बार बना लीजिए. एक खूबसूरत से इसको बना लीजिए आराम से. You will raise your hand once you're done writing. Chitra is done. Waiting for Deborah, Safia, Fadil, and Yusuf. Okay, just waiting for Yusuf now. Yusuf, please raise your hand once you're done. Check. All of you will. ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई. तो अब ना थोड़ा सा आप हाफ अ पेज आप थोड़ा सा छोड़ दें, ठीक है ना. उसमें आप एक बार खुद से अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा कि क्या हो रहा था यहाँ पे, क्या नहीं हो रहा था. तो ट्राई टू राइट वंस. ये फोटो तो आपके पास है, ठीक है. तो आप स्टेप वाइज ना इसको एक बार खुद से अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा. हाफ पेज आप उसके लिए छोड़ दीजिए, ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग. वो सारी चीजें नोट्स में तो रहेंगी आपकी, बट एक बार आप खुद से आप इसको एक्सप्लेन करने की ना. लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग जिंक का एक रिएक्शन हुआ, देन यू हैड द इलेक्ट्रॉन वेंट टू कॉपर, ठीक है. एंड देन व्हाट वाज द यूज ऑफ दिस होल थिंग दैट वी हैव रिटन, जहां पे KCl है, ठीक है. आफ्टर दैट यू विल राइट गैल्वेनिक सेल. हेडिंग लिखिएगा गैल्वेनिक सेल. Okay, so what is now galvanic cell? Right here, the cell in which spontaneous redox reaction
occurs due to which chemical energy is converted to electrical energy. Converted to electrical energy. ठीक है. In a galvanic cell, there are two compartments. ठीक है. कितने compartments होते हैं? There are two compartments. एक को बोलते हैं anodic compartment, which is also known as anode. और जो खास बात है यहाँ पे, that oxidation occurs here. So wherever the oxidation occurs, that is the anode. Okay. So oxidation occurs here. Oxidation occurs here. And the polarity of this particular anodic compartment, polarity is negative. Polarity is negative. है ना? Because oxidation होगा तो loss of electron. So obviously electron will be on this particular electrode. इस particular rod में क्या होंगे? Electrons बचे रह जाएंगे. Then you have the cathodic compartment. Cathodic compartment. In cathodic compartment, we call this simply as cathode. And reduction occurs here. And the polarity of cathodic compartment is positive. And that is why electrons will come to this particular cathode. Cathode में electrons आएंगे and the species will be gaining those electrons, getting reduced. ठीक है? So this is the cathodic compartment. Now, one such example of galvanic cell जहाँ पे chemical energy को use किया जाता है to form electrical energy is what we have just seen. That is known as specifically Daniell cell बोलते हैं उसको, in which we have copper and zinc cell. So we'll write here Daniell cell. Daniell cell. This is what? This is the copper zinc cell. So in which we are using copper and zinc. Okay? Copper zinc cell. Now obviously here we are going to have two different compartments. One will be the zinc compartment, one will be the copper compartment. तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा. What are the things happening at the zinc compartment? So number one, you will write at zinc compartment. At zinc compartment. Okay, we have seen all of these things, so I'm not going to explain much, but थोड़ा point फिर भी लिख लीजिए. What is the reaction that is happening? Zn is giving you Zn2 positive, and there are 2 electrons given by the zinc. ठीक है. अच्छा, अब because this is what? This is what यहाँ पे electron lose हो रहा है. That is why it is oxidation. Oxidation. Therefore, इस compartment को हम बोलेंगे कि ये anode है. This is what? This is anode. And obviously its polarity will be negative because electrons इसी rod पे रहेंगे तो polarity उस rod की क्या हो जाएगी? It would be negatively charged. अच्छा, if the zinc is getting converted to Zn2 positive, तो जो zinc rod है उसका mass decrease करेगा. We will write mass of Zn rod will decrease and concentration of Zn2 positive increases. Zn2 positive की concentration क्या होगी? Increase होगी. ठीक है, Zn2 positive की concentration तो increase होगी, but उस compartment पे positive charge नहीं आएगा because the Cl negative will come running, वो neutralize कर देगा charge को. लेकिन Zn2 positive तो रहेगा उतना ही, तो उतना ही Cl negative आ जाएगा, दोनों balance कर देंगे, charge balance होगा, but Zn2 positive की concentration increase करेगी. ठीक है? Now what is going to happen at the copper compartment? We will write कॉपर कंपार्टमेंट में क्या हादसा हुआ? एट कॉपर कंपार्टमेंट the reaction that is happening is copper is eating up, copper 2 plus is eating up the electrons. Yeah, copper 2 plus is eating the 2 electrons and it is giving you copper solid.
Now, what is happening? This is obviously reduction. The gain of electron. Therefore, it is what? Cathode. Therefore, it is cathode. Then if we talk about the polarity here, now since the electron are coming to this rod, it should be positively charged, right? It is positively charged. And what is happening to the mass of copper and concentration of copper 2 plus? The mass of copper rod will increase because solution से rod में copper deposit होता जा रहा है and concentration of copper 2 positive will decrease. ठीक है ना. अगर हम बात करें ओवरऑल सेल के बारे में, ठीक है ना, अब एक बात जो होगी वो तीसरी बात होगी. ये तो कहते हैं अलग अलग जगह क्या हो रहा है. तीसरी बात जो होगी ओवरऑल सेल में क्या हो रहा है. ओवरऑल सेल में तो एक चीज जो हो रही है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो जरूर हो रहा है. सो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो हो रहा है, वी विल से दैट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम, या फिर फ्लोइंग लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा, फ्लोइंग फ्रॉम जिंक कंपार्टमेंट टू कॉपर कंपार्टमेंट. ठीक है, तो बेसिकली इन जनरल हम बोल सकते हैं क्या, इन जनरल फ्रॉम एनोड टू कैथोड. इन जनरल फ्रॉम एनोड टू कैथोड. ठीक है, और दूसरी चीज जो हो रही है सेल के अंदर, वो क्या हो रहा है, द सेल रिएक्शन इज द करेक्ट. सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं देखिए गाइस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू हैव टू डेवलप इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. बहुत ही बड़ा ये है. जिंक आपको दे रहा है Zn2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड में जो रिएक्शन हो रही है दैट इज कॉपर 2 प्लस इज ईटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स and giving you copper. So this is the reaction that is happening in the different compartments. But overall cell की अगर हम बात करें, so we are going to add this. अब जब आप add करेंगे तो at the end you will get 2 electrons in the reactant, 2 electron product में भी, तो उसको हम अभी से ही cancel कर सकते हैं इस तरह से. ठीक है. Now what you are going to have? You are going to have copper 2 plus and zinc, which is going to give you Zn2 plus and copper. So basically this is the reaction which is occurring in the cell. Overall cell में आपके पास क्या reaction हो रहा है, copper 2 plus plus zinc, it is giving you Zn2 plus and copper. This is the cell reaction, we call it cell reaction. ठीक है, इसके बाद आएगी बारी थोड़ा समझने की सॉल्ट ब्रिज, जो हम लोगों ने बनाया था सॉल्ट ब्रिज. यहां तक देखिए एक्सप्लेन करने की कुछ जरूरत तो नहीं पड़ी. Guys, tell me. Deborah, Rachita, Safia, Yusuf. Guys, tell me. No need to explain anything, right? हाँ जी, किसी को नहीं ना. ठीक है. All of these things we have already seen ना, जो हम लोग कर रहे थे. तो salt bridge, ठीक है ना, ध्यान दीजिए guys and write with me. What is salt bridge? It is a inverted U-shaped tube. देखिएगा. It is, हाँ जी बताएं. Can you scroll up? Till here? Yeah, just a second. Yeah. Yes, sir. Carry on. So in salt bridge, what is salt bridge? It is, please write inverted U-shaped, inverted U-shaped tube. Give me a second. Inverted U-shaped tube containing containing solution of, ऐसे लिख लीजिए, solution of inert electrolyte. Obviously, whatever electrolyte I'm going to use in the salt bridge, they should not react with the species that is present in the compartment, है ना. Electrolyte
with agar agar or agar agar or gelatin in semi-solid form. Gelatin in semi-solid form. The salt in solvent we can use electrolytes such as KCl, KNO2 and NH4NO3. ठीक है. Now gelatin is something जो आपको शायद समझ में आए. अगार अगार क्या होता है? अगार अगार it is like a paste. ठीक है, जिस तरह से कोलगेट का पेस्ट वगैरह होता है, it is like a paste only. Now we don't have water वगैरह का solution वहां पे नहीं ले सकते because it is inverted. And if something is inverted, तो water रहेगा तो वो तो बाहर निकल जाएगा. So paste type of thing can be there, which in which the ions can flow also, लेकिन वो पूरा बाहर नहीं निकल जाएगा, है ना. Whatever the solvent is, वो solvent बाहर नहीं निकलना चाहिए. ठीक है. तो अगार अगार इज टाइप ऑफ पेस्ट और दिखने में ना वो थोड़ा सा बालू वालू टाइप का रहता है. एंड उस बालू के अंदर आप मान लीजिए स्लाइम देखा आप लोगों ने. स्लाइम होता है ना जिस तरह से बच्चे जिससे खेलते हैं. ठीक है. सो स्लाइम एंड देन यू ऐड देयर सैंड एंड स्लाइम. तो उस तरह का दिखता है. एग्जैक्टली व्हाट इट इज, इट्स अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है. तो अगार अगार इट इज जस्ट, आप ये समझ लीजिए कि पेस्ट होता है जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म में यू कैन हैव अ सॉल्यूशन. यू कैन हैव अ सॉल्यूशन इन अ सेमी सॉलिड फॉर्म बिकॉज आई हैव टू कीप दिस इन्वर्टेड. ठीक है. यू हैव दिस इन्वर्टेड. ओके. नाउ सॉल्ट ब्रिज हो गया. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज? दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट. फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज. फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज. फर्स्ट फंक्शन जो आप लोगों को शायद पता, इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल टू कंप्लीट द सर्किट. प्लीज नहीं, इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल टू कंप्लीट द सर्किट. ठीक है. एक चीज जो मतलब पहले लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है. सो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से जा रहा है. तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा. एंड दैट वाज एक्चुअली हैपनिंग. दिस वाज गेनिंग अ पॉजिटिव चार्ज, राइट. वही एक्चुअली में हो रहा है. तो और फिर सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया? बेसिकली सॉल्ट ब्रिज जस्ट कनेक्टेड दीज टू. अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं तो चार्ज डेवलप ना हो जाए, दैट इज व्हाई दीज आर गोइंग टू बी कंप्लीटिंग द सर्किट, है ना, जब कनेक्ट कर देंगे दोनों को. तो दिस इज द वर्क ऑफ सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली. एंड और क्या है, और दोनों की बाकी चीजें तो हम लोगों ने लिखी उसी टाइम समझा था. ध्यान दीजिएगा. सेकंड पॉइंट हियर इज it converts solution of two half cell to complete the circuit. Then it maintains, please write, it maintains the electrical neutrality of the solution. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ये हम लोगों ने देखा था, Zn पॉजिटिव ज्यादा पॉजिटिव ना हो जाए और कॉपर वाला कंपार्टमेंट ज्यादा नेगेटिव ना हो जाए उस वजह से. ठीक है ना. तीसरा वाला आप मेरे तरफ से ले लीजिए याद करने के लिए. ठीक है ना. ये समझ में आप लोग, मतलब ये आपके सिलेबस में भी नहीं है लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, लेकिन आपको याद कर लेना बस तीन. इट मिनिमाइजेस लिखिएगा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. ठीक है. बेसिकली लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल तभी डेवलप होता है व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द जिंक कंपार्टमेंट and a lot of negative charge in the copper compartment. Then we have a liquid junction potential, and उसी को खत्म करने के लिए we have the salt bridge. All of you understood till here? Yes or no? Please tell me. हाँ जी, सफिया, रचिता, यूसुफ, डेबोरा, ऑल ऑफ यू. ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं? Okay. Now after this you are going to write important part, that is
cell representation. Cell representation. Now, whenever we have to represent a cell, हम ऐसे एक डब्बा दो डब्बा तो नहीं बनाने लगेंगे ना, एक कॉपर का और एक जिंक का. We have to have some kind of we have to have a way which minimizes the effort, है ना, जो थोड़ा सा आसानी से हम लोग सेल को रिप्रेजेंट कम से कम कर सके, है ना. You should be able to at least represent the cell. Just give me a second. I will to activate the test right now for you. Electrochemistry is the chapter's name. Forgot to update the team about it. ठीक है, चलिए. So you have written the cell representation. ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है. सेल रिप्रेजेंटेशन मतलब दिस इज द फर्स्ट थिंग यू लर्न, है ना. सबसे पहले आप लोगों ने क्या सीखा था बताएंगे जरा, पढ़ाई लिखाई के मामले में. स्कूल गए आप लोग, सबसे पहले आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने सेल रिप्रेजेंटेशन सीखा सबसे पहले. सच में नहीं पता आप लोगों को? पता है. सबसे पहले जब आप लोग स्कूल गए ना, 12th की बात भी नहीं कर रहे हैं. Alphabets. सॉरी, The alphabets. हाँ बताइए जरा, स्टार्ट कीजिए, बोलो, अल्फाबेट बोलो. A, B, C, D, E, F, G. बस 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 काफी, ABC हो गया. ये है सेल रिप्रेजेंटेशन, और कुछ नहीं है. नर्सरी के बच्चे को भी आगे आ जाएगा. देखो कितना आसान. एनोड, ब्रिज और कैथोड. ठीक है, तो आपको कोई बच्चा मिलेगा ना, ऐसे कजन वजन आएंगे. ए फॉर एप्पल, ना 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 ना. ए फॉर एनोड, बी फॉर ब्रिज, सी फॉर कैथोड. ठीक है ना. तो अब एबीसी बदल गया है. ठीक है, एबीसी क्या हो चुका है, बदल चुका है. तो एनोड में आप लोग को ये ध्यान रखना है, बस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सारी चीजें हम आपको बता देंगे. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एनोड में कौन सा रिएक्शन शो करना पड़ेगा. यू हैव टू शो द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट. ऑक्सीडेशन इज शोन इन एनोड, और दूसरा रिडक्शन इज शोन इन कैथोड. सही है. तो जैसे कि हमारा जो सेल था अभी Zn और कॉपर वाला, तो उसके लिए आई कैन यूज, अच्छा चलिए ठीक है, लिख लीजिए इसको जरा, हम समझाते हैं आप लोगों को. ऑल डन ना. ठीक है, ध्यान दीजिए. इफ यू रिमेंबर द रिएक्शन, कोई बोलेगा एक बार, कोई रिपीट कर दे, रिएक्शन क्या हो रहा था हमारे सेल में. सेल रिएक्शन क्या लिखा था हम लोगों ने, टेल मी गाइस. अरे कोई नहीं बोलेगा, जिंक कॉपर वाला कोई बोल दो. देख के बोलिए, देख के, याद करने की जरूरत नहीं है. हाँ Zn यूसुफ 2 आप, plus अच्छा बोलिए. Zn, Zn 2 plus plus 2E minus. नहीं नहीं, सेल रिएक्शन. सेल में क्या रिएक्शन हो रहा था, सेल रिएक्शन लिखा है हम लोगों ने, देखो पहले लिखा हम लोगों ने जिंक कंपार्टमेंट में, है ना. Plus क्या लिखा Cu बताइए. plus Cu. प्लस, ऐसे नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो रहा था ना, ऐसे हो रहा था. Zn प्लस कॉपर 2 प्लस था ना, देखिए जरा. ठीक है, Gives, and it yes, was gives giving us you Zn 2 plus Zn2 plus plus Cu. and हाँ कॉपर. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज और व्हाट इज गेटिंग रिड्यूस्ड. ठीक है, तो अगर हम आइडेंटिफाई करने लगे तो जिंक का यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड ना, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है. जिंक यहाँ पे 0 के ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड यहाँ पे 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. if I talk about copper, तो कॉपर में यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, राइट. कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड हियर.
ठीक है, तो ऑब्वियसली एनोड में कौन आएगा, जिंक आएगा या कॉपर आएगा, बताइए जरा। Zinc. एनोड में कौन, जिंक आएगा ना, वेरी गुड। ऐसे शो करेंगे Zn, और किस में कन्वर्ट हुआ है, स्लैश देंगे, एंड देन यू विल राइट Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, और ब्रिज को जो शो करेंगे, ब्रिज को हम ऐसे शो करेंगे, दो पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन जैसे बनाते थे ना, उसी तरह से। कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर में आपके पास कॉपर 2+ था, और क्या बन जा रहा है, कॉपर बन जा रहा है। और समझ में आ गई सबको, हाँ जी, दिखा, ऑल ऑफ यू गाइस टेल मी। सफिया, यूसुफ एंड डेबोरा। Yes, डेबोरा आपको समझ में आया, यूसुफ आया समझ में, ठीक है। चलिए देखिए, अब दिस इज अ वेरी बेसिक वे ऑफ राइटिंग, ठीक है ना, सुनिए जरा सुनिए, बहुत बेसिक। अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो ऐसे लिखने के करेंगे, लिखेंगे आपको, ठीक है। लेकिन बहुत सारे अलग अलग तरीके जिससे इसको लिखा जा सकता है, जैसे कि आप और इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। Zn सॉलिड स्टेट में है, Zn2+ एक्वस स्टेट में है, और ब्रिज है यहाँ पे, एंड देन कॉपर 2+ इज इन एक्वस स्टेट यहाँ, एंड कॉपर इज इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ। व्हाट एल्स यू कैन राइट, आपको इनके साथ साथ दे कैन ऑल्सो गिव यू द कंसेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट आयंस, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। दे कैन ऑल्सो गिव यू द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस। कैसे, इससे घबराने की जरूरत नहीं, नथिंग चेंजेस हियर, ठीक है ना, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बट द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इट इज जस्ट गेटिंग इंक्रीज। आपको यहाँ पे ऐसे दे दिया, मान लीजिए 0.1 मोलर, है ना, और कॉपर 2+ के बारे में आपको दे दिया इस तरह से 1.1 मोलर। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन इंक्रीज हुई है। अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस वुड बी व्हाट, आपको Zn सॉलिड और स्लैश करके क्या दे दे, ZnSO4 दे सकता है एक्वस में, बिकॉज ऑब्वियसली दी सोल्यूशन वाज हैविंग ZnSO4, एंड ZnSO4 में ही Zn किस स्टेट में, Zn2+ के स्टेट, इवन दो SO4 डज नॉट मैटर, कुछ उसका ये लेना देना नहीं है, बट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस आल्सो। हम लोग इसको यूज करेंगे, बट देखिए आजकल हो क्या गया है, थ्योरी के सवाल तो आते ही आते हैं, प्लस में आपको एमसीक्यू भी आता है। अब एमसीक्यू में इन फॉर्म्स में से कोई एक फॉर्म अगर आपको दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। दैट इज व्हाई आई एम शोइंग ऑल द थिंग्स कि आपको किस किस तरह से दिया जा सकता है। आपको अगर पूछा जाए कि फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन रिप्रेजेंट दी सेल, आप बस ये लिखना है, आपको ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, ठीक है ना। इफ दे आस्क यू टू राइट, बट अब ऑप्शन में दे दिए एबीसीडी, तो ये इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है, अगर उन्होंने ऑप्शन में दे दिया तो, ठीक है। तो आपको सारी चीजें पता रहनी चाहिए। लेकिन ऑल्सो गिव लाइक दिस, कॉपर को उन्होंने क्या लिख दिया, कॉपर सल्फेट इन एक्वस सोल्यूशन एंड कॉपर इन सॉलिड। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन आप एक बार लिख लीजिए, ताकि आप कहीं देखें तो आप डर ना जाए, है ना। चलिए, लिख लिया सबने, यस, सफिया, यूसुफ एंड डेबोरा, डन राइटिंग। yes, sir. अच्छा अच्छा, ठीक है, लिख लिया था, अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको करके दिखाइए। अच्छा, एक और देख लीजिए जरा, एक एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं। लेट सपोज आपको ऐसे दिया हुआ है, एल्यूमिनियम प्लस
कॉपर 2+, अभी देखिए उसके बाद दिखेगा, ठीक है ना। अभी देखिए आपको दिया हुआ है 2Al3 पॉजिटिव प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 3 कॉपर, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के बाद ये सारी चीजें आती हैं, आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है गाइस। ध्यान से देखिए जरा। नाउ व्हेन यू हैव बीन गिवन समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे आपको स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे उतना ज्यादा ध्यान देने का है नहीं जरूरत, ठीक है। यू डोंट हैव टू लुक एट द स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यू जस्ट नीड टू लुक व्हाट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, व्हाट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। उसके अलावा आपको कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं है। इट विल बी 3 कॉपर आई थिंक, राइट, है ना। हाँ ठीक है। So they have given a reaction like this. आपको बस ये देखना है that what is happening to aluminium. Tell me guys, aluminium का क्या हो रहा है? Oxidation. Oxidation. Oxidation, right? So aluminium is getting oxidized. And what is happening to copper? Reduced. Reduction. हाँ, reduction. Very good. हाँ यूसुफ, आप बोलिए, आपका जवाब नहीं आ रहा था बिल्कुल। ठीक है, तो बस आपने क्या करना है, एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो रहा है वो लिख देना है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। फिर ब्रिज लगाइएगा, यू विल राइट कॉपर 2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉपर टू पॉजिटिव नहीं लिखना है, यू हैव टू शो दैट देयर इज अ रिडक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस, है ना। ये देखिए आप यहाँ पे एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इट इज शोइंग दैट ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग। कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है, तो रिडक्शन इज हैपनिंग, यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। क्लियर है सफिया, रजिता, सबको? Yes, sir. ठीक है, चलिए हम आपको अब एक एग्जांपल दे रहे हैं, यू विल राइट इट। बस एक तरह का लिख देना आपको, है ना। राइट हियर इफ यू हैव निकल plus 2Ag positive, giving you nickel 2 positive plus 2Ag। एक इसका कीजिएगा, तीसरा लिखिए, you have copper 2 plus Mg, giving you Mg2 positive and copper, ठीक है। तीसरा लिखिए, चौथा हो जाएगा, दिस विल बी फोर्थ। निकल, निकल छोड़ते हैं, कुछ और लेते हैं, शुड बी टेक Zn ले लेते हैं, Zn plus H positive, giving you H2 plus Zn2 positive, यहाँ पे 2H positive आ जाए। इन तीनों का यहाँ पर सेम। Yusuf, you have my number? No, sir. You don't have my number. So can you please write this down? आपने लास्ट ईयर लिया नहीं था हमसे? I did take, but I think I've lost it. ठीक है, once you're done, you will message me here, okay? Send your answers, I mean. Yes, very good. सत्य पहला सही है आपको, और नहीं आपको, ठीक है, वेरी गुड।
Very good, very good. Satya, everything is correct. You just stay here. I have to ask, I have to tell you guys a few more things. ठीक है ना? उसके बाद I will end this class. It is regarding the cell representation itself. ठीक है, ऑफर वाले में ठीक है, ऑफर का लिखा था आपने? अच्छा, इधर लिखा है। कॉपर वाले का सही है, देखिए जरा आप, रजिता। जिंक का सही है आपका, और निकल वाला सही है, निकल एजी वाला। कॉपर वाला सही नहीं है, देखिए। यू गॉट द मिस्टेक रजिता? ए बी सी ना। एनोड पे क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन एनोड? Oxidation. एंड व्हाट यू हैव रिटन इन एनोड? देखिए कॉपर वाले में देखो, गॉट इट ना? ठीक है। डेबोरा, ठीक है, कॉपर वाले में ठीक है, वेरी गुड। आखिरी वाला भेज दीजिए बस, डेबोरा, लास्ट वन। ठीक है, वेरी गुड। यूसुफ, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर ना। H2 बन रहा है ना, H2, तो लास्ट वाले में H प्लस से H2 होगा डेबोरा। यू हैव रिटन ओनली H, इट इज H2, तो यू विल राइट H2। गॉट इट? यस डेबोरा। ठीक है, यूसुफ। Just 2 minutes, sir. अच्छा, well, Yusuf, can you send me whatever you have done till now? Sending it, sir. What happened, Yusuf? You cannot add me on WhatsApp? Is there a problem? I just added. I'm sending the. अच्छा, I have your number still. Yeah, okay.
nickel one is fine. Send the others. H plus से H2 होगा. I think last वाले में कुछ बच्चे confuse हो गए. For this one it will be Zn, which is getting converted to Zn2 positive, and whatever the species is getting converted ना आपको बस वही लिख देना है, ठीक है? It is going to be H plus, which is getting converted to H2. Fine. Now just listen here, guys. ठीक है? थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा. H2 is a gas, right? All of you know this, correct है? H2 is a gas. If you remember the zinc and copper compartment, या फिर आप किसी भी और देख लीजिए reaction में, I can have a rod of nickel, I can have a rod of Ag also. Both of them are metal. I can have a rod of magnesium, I can have a rod of copper also. Previously speaking, I can have a rod of aluminium anode में और copper का cathode में. सबको दिख रहा है ये चीज हाँ या ना? But in the case of H2, it will be difficult. Na? I cannot have a rod made up of H2 gas. Is that right? Yes or no? Correct. So that is why instead of H2 को हम लोग ऐसे glass tube में रखते हैं. That H2 should be passed out like this in the glass tube. And जो electrode होता है ना जहां पे reaction हो रही है, that is actually a wire. ये nichrome wire ऐसे आया. And here we have a surface which is made up of platinum. ठीक है? ये platinized surface रहता है. मतलब जो कुछ भी मेटल रहेगा उसके ऊपर में प्लैटिनम का सरफेस रहता है. सो द रिएक्शन एक्चुअली हैपेंस हियर और फिर H2 यहां से ऐसे करके लिबरेट हो जाता है ना, ठीक है? H2 गैस इट लिबरेट्स लाइक दिस एंड इट गोज आउट. नाउ सिंस H2 इज पासिंग थ्रू द हेल्प ऑफ Pt, इन मेनी ऑफ द केसेस यू विल बी सीइंग समथिंग लाइक दिस. या तो आपको ऐसे दिया रहेगा कॉमा करके Pt सॉलिड, ठीक है? यू डोंट हैव टू राइट. आपने जितना लिखा आपका बिल्कुल सही है, बट लेकिन वही आपको बताना जरूरी है कि कैसे कैसे दिखाया जा सकता है, ठीक है ना? एंड हियर जहां पे भी H2 होगा ना उस साइड में रहता है Zn से Zn2 पॉजिटिव, और फिर आपके पास इस तरह से होगा H2, सॉरी नॉट H2 हियर, रादर इट विल बी H प्लस स्लैश H2 स्लैश Pt सॉलिड, ऐसे भी लिखा रह सकता है, ठीक है? अगर कोई दूसरा रिएक्शन होता है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैड लाइक दिस कॉपर प्लस, दिस वुड नॉट बी कॉपर, कॉपर 2 प्लस हो जाएगा. You would have, if you had H2 plus copper 2 positive giving 2H positive and copper solid, ठीक है? So for this particular reaction, if I look at hydrogen is getting oxidized and copper का क्या हो रहा है? Copper का reduction हो रहा है. So for this I will write the cell reaction as H2 slash H plus. लेकिन किताबों में आपको ऐसा दिख सकता है, H2 से पहले platinum solid, उसके बाद डबल बॉन्ड, सॉरी नॉट डबल बॉन्ड, दैट इज द ब्रिज, कॉपर 2 प्लस से कॉपर. ये क्लियर है सबको? यस और नो प्लीज टेल अबाउट द प्लैटिनम थिंग. हाँ जी, यूसुफ, डेबोरा, रजिता, सफिया, ऑल ऑफ यू क्लियर ना? ठीक है, आज की क्लास सबको समझ में आई? सही सही, नो प्रॉब्लम टिल हियर, नो प्रॉब्लम ना? ठीक है. एक चीज और, मतलब आपके असेसमेंट में इस वजह से हम बता देते हैं आपको, ठीक है ना? जनरली इनिशियली स्टार्टिंग में बताया जाता है, तो हम लोग सेल पढ़ने वाले, एज वी हैव सीन अ गैल्वेनिक सेल. क्या पढ़ने हैं हम लोग? गैल्वेनिक सेल पढ़ा है हम लोगों ने, गैल्वेनिक सेल. और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसको बोलते हैं, ठीक. गैल्वेनिक सेल इज आल्सो नोन एज वोल्टाइक सेल, है ना? उसको क्या बोलते हैं? वोल्टाइक सेल, जो वोल्टेज देता है. इन गैल्वेनिक सेल व्हाट इज हैपनिंग? केमिकल एनर्जी से आप बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा हो जाएगा, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेंगे केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करने के लिए. बेसिकली कोई केमिकल रिएक्शन करने के लिए आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे. याद रहेगा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में. वी आर गोइंग टू रीड इट इन डिटेल, लेकिन असेसमेंट में एक सवाल है, दैट इज व्हाई आई हैव जस्ट टोल्ड यू गाइस सो दैट यू कैन आंसर दीस थिंग्स आल्सो, ठीक है? चलिए, that's it for today. All of you please go to the Learnivio app. There you will see an assessment. The topic of the assessment should be galvanic cell construction and representation. Galvanic cell construction and representation. यूसुफ, आपने अकाउंट बनाया था क्या? Yes sir. अच्छा, बनाया. देखिए जरा अकाउंट में. अच्छा, आपको कहाँ जाना होगा? एक सेकंड, आई विल टेल यू हाउ टू नेविगेट. वेट अ सेकंड, दिस मस्ट बी योर फर्स्ट टाइम. आप कर सकते हैं. रचिता, सफिया, कोई बताएं, इज इट एक्टिवेटेड? क्या आपको दिख रहा है? आपने
Yes, sir. It's activated. ठीक है. Let me know if you have if you are in the app right now. यूसुफ आपने ऐप खोल लिया? Yes, sir. I mean, You're in app या फिर वेबसाइट में? एक बार कंफर्म कर दें आप. ऐप नहीं है? it's yeah app. App, right? Okay, fine. So just let me see. What happened? So excuse me, but may I please leave? Sorry? Can I please leave? हाँ, you guys can leave. You guys can leave. Thank you, sir. अच्छा यार इसमें तो थोड़ा सा अलग हो गया है. I have not updated app. ठीक है. अच्छा by the way, there will be 3 lines side में कहीं पे, ठीक है ना? And वहां पे ऐसे class assessment आ रहा होगा at the end. 3 lines आप वहां